चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें शुरू करना है वो है रूट 53। Now this route 53, this is all about DNS management in cloud. Amazon is offering you this DNS management service under the banner Route 53. So actually we need to understand the DNS. DNS का full form होता है Domain Name System. Domain Name System. In fact, it's a protocol. ये एक TCP/IP प्रोटोकॉल है. Just like we know some other TCP/IP protocols, जैसे you know HTTP ब्राउजिंग में आपने यूज किया है. HTTPS आप यूज करते हैं डेली बेसिस पर, राइट? We have FTP, right? HTTP is hypertext transfer protocol. This is hypertext transfer protocol secure. This is FTP file transfer protocol, right? Like this you have SMTP, simple mail transfer protocol. SNMP, simple network management protocol, right? POP3 post office protocol. ये सब TCP/IP protocols ही हैं, right? Which are all working at layer 7. That is the application layer. Similarly, DRES is again TCP/IP protocol और ये भी layer 7 का protocol. Layer 7 यानी application layer, right? And every upper layer application या protocol या service जो भी है, they're all identified by a port number, right? For example, HTTP port number 80 आपको पता है, right? FTP is 2021, HTTPS 443, right? SMTP is 25. ये सब कुछ commonly used port numbers हैं. उसी तरीके से DNS, the default port number is 53. So based on this number 53, we have this 53 here, root 53. Right, so 53 here it signifies the port number used by the protocol DNS, and route से यहाँ पर मतलब है that this service it routes the customer traffic to the correct destination, right? It routes it. Okay, so what does it mean? And function of this protocol, ये तो सब बात नहीं, नॉर्मल TCP प्रोटोकॉल है, लेयर 7 का है, 53 इसका पोर्ट नंबर है डिफॉल्ट. फंक्शन क्या है इसका? ये प्रोटोकॉल एक बहुत छोटा सा काम करता है. It translates. This protocol translates a given host name. It translates a given host name to IP address and vice versa. We can also find out that for a given IP, what is the host name. बस इतना ही काम है. Okay, translation. So अब बात ये कि ट्रांसलेशन की जरूरत क्यों है, right? You know it, you are doing it. Google.com, Amazon.com, ये सब names हैं, right? But in real communication is all established on IP address, right? तो देखिए होता क्या है, इंटरनेट हम सभी लोग यूज कर रहे हैं, और मैंने आपको शायद बताया होगा कि इंटरनेट टेक्निकली स्पीकिंग ये TCP/IP नेटवर्क है. इट्स ए TCP/IP नेटवर्क, एंड दैट इज द रीजन दैट दिस इंटरनेट, दूसरी बात क्या है इस इंटरनेट के साथ, दिस इज वेरी वास्ट नेटवर्क. ये दूसरी बात है, राइट? काउंटलेस डिवाइसेस आर देयर. मतलब आज की डेट में हमें ये पता भी नहीं कि कितने डिवाइसेस यहाँ पर हैं, और क्योंकि ये TCP/IP नेटवर्क है, so to communicate to any of these devices here,
we are using the layer 3 protocol of TCP/IP address. Layer 3 protocol address. Layer 3 protocol of TCP/IP, उस एड्रेस को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि TCP/IP नेटवर्क है. So to communicate to any of these devices here on the internet, we are using the layer 3 protocol address of TCP/IP. और layer 3 protocol क्या है? IP. IP is the layer 3 protocol. जैसे अभी मैंने बताया DNS या HTTP, ये layer 7 के प्रोटोकॉल्स हैं. उसी तरीके से layer 3 का प्रोटोकॉल है IP. So we are using IP address, right? IP address हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट एक TCP/IP नेटवर्क है, इसलिए यूज कर रहे हैं, right? And internet is very fast. We have got billions of devices. To whichever device you communicate over the internet, you are using the IP address, right? Technically, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, right? टेक्निकल अगर देखा जाए तो कोई इशू नहीं है. इट्स फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट. तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम हम लोगों के साथ है. वी एज ह्यूमन बीइंग्स, राइट? और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इज दैट वी आर वेरी वीक इन नंबर्स. आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिक वैल्यू और हम लोग नंबर्स में बहुत वीक in the sense that we just cannot remember these numbers for long. Retention ही नहीं है, right? So ideally speaking, whenever you are going to communicate over the internet to any device, you should know the IP address. जैसे आप Google सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं तो कायदे अनुसार आपको IP एड्रेस मालूम होना चाहिए, right? तभी आप कम्युनिकेट कर सकते हो. और IP एड्रेस हमें मालूम नहीं, मालूम करा भी दिए जाए तो भी कोई फायदा नहीं क्योंकि हम रिटेंशन ही नहीं है ब्रेन में, राइट? हम 2-4 IP एड्रेस जो है याद कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, frequently used. But if you need to access, right, billions of devices based on IP address, this is impossible, right? But we people are very comfortable in names, host names. Host name काफी हद तक हमें याद रहते हैं, right? रिटेन रहते हैं. So होता क्या है practically? We as human beings we try to use the names to communicate. लेकिन नाम यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है क्योंकि TCP/IP नेटवर्क है. इट सपोर्ट्स IP एड्रेस ओनली. ये गैप है. दिस द गैप. We people are comfortable in names, but internet it's a TCP/IP network supports IP address. IP address पे हमें प्रॉब्लम है, right? If I use IP address, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. But हमें IP address पता ही नहीं. We cannot retain. This is the gap, and we have to find out some way to bridge this gap. हमें कोई ना कोई तरीका ऐसा निकलना है जिसमें गैप जो है मिनिमाइज किया जा सके, right? Wherein actually, suppose I use a name to communicate, so we should have some mechanism in place which is going to translate this name to the IP address, right? तो क्या कर सकते हैं? तो वन ऑफ द सिंपल वे जो हम कर सकते हैं, जो कोई भी बता सकता है, नॉन टेक्निकल बंदा भी बता देगा आपको कि ऐसा करो, राइट? एक फाइल बनाओ, अपने सिस्टम में एक फाइल बना दो, राइट? और उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन सेव कर दो. क्या है? उसने इन करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस ऐसा बना दो. So here I am going to create a name because I cannot retain this information in my brain. So I'm going to have it saved in my device, right? मेरा लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है वहाँ पे मैंने फाइल बना दी है, which is in fact a mapping database file which contains mapping information between name and IP address. So हमने लिखा google.com, this is the IP, right? amazon.com, and this is the IP. yahoo.com, this is the IP, right? ऐसा अगर हम कर दें तो काम हो जाएगा. हो जाएगा नहीं, या हो जाना Yes, चाहिए. sir. So now whenever I'm going to use the name, ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे आपका मोबाइल हैंडसेट है, उसमें आप एड्रेस बुक मेंटेन करते ही. सेम केस मोबाइल में भी ऐसा ही है ना.
तो मोबाइल में जब आपका फोन बुक या एड्रेस बुक है तो उसमें क्या है, यू हैव द नेम एंड यू हैव द फोन नंबर करस्पॉन्डिंग, राइट। यही डाटाबेस है, क्योंकि नंबर आपको याद नहीं है, दो चार नंबर याद हो भी सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। बट इन जनरल अगर आपके पास एड्रेस बुक में 50-40 जो भी नाम है उनको आप डायल करते हैं, सो यू आर गोइंग टू मेक ए सर्च इन द एड्रेस बुक, राइट। सेलेक्ट द पर्सन नेम, प्रेस द बटन, लेकिन नाम तो डायल नहीं होता है, नंबर डायल होता है, राइट। नाम तो आपके लिए है, नंबर डायलिंग के लिए है। उसी तरीके से यहाँ पर उस नेम है, आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेशन होता है। तो वैसे ही हो गया एड्रेस बुक जैसा, यस। लेकिन एड्रेस बुक और यहाँ पर काफी अंतर है। अंतर क्या है कि एड्रेस बुक का साइज जो है आपके पास वो तो बहुत लिमिटेड है, कितनी एंट्रीज होगी इसमें, 40, 50, 100, 150, दैट्स ऑल, राइट। But here, if suppose you are going to make the entry of each and every resource what we have over the internet, so can you imagine the size of this file? It will have lakhs of entries. So such a use, it's a database file now. It's like a database file. Such a huge database file, if you're going to maintain on your system, which perhaps going to consume GBs and TBs of space, right? So do you think that your system is powerful enough to handle such a huge database file to manage in terms of storage space, in terms of RAM, in terms of processor, all those things, right? Not necessary. और अगर हो भी गया, मान लीजिए आपका, आपने बोला नहीं सिस्टम बहुत पावरफुल है हमारा, हो जाएगा, ठीक है। बट ऑन हाउ मेनी सिस्टम्स यू कैन हैव इट, राइट। यू हैव द एंटायर नेटवर्क सेटअप, आपके नेटवर्क में 100-500 डिवाइस हैं, तो आर यू गोइंग टू मेंटेन दिस फाइल ऑन ईच एंड एवरी सिस्टम लाइक दिस? कायदे अनुसार आपको ये फाइल हर सिस्टम पे रखना पड़ेगा, isn't it? जितने मोबाइल उतनी एड्रेस बुक, उसी तरीके से जितने सिस्टम उतनी ही फाइल आपको इस तरह से मेंटेन करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू हैव ऑल द सिस्टम पावरफुल। आपका मोबाइल भी इंटरनेट पर है, कैन यू इमेजिन कि आपका इतना बड़ा फाइल जो सारी जीबीज टीबीज में है आपके मोबाइल में भी, जस्ट बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग टू द इंटरनेट यूजिंग अ मोबाइल ऑल्सो, नॉट पॉसिबल, isn't it? That's the limitation. Technically, a solution viable. And let me tell you that we do maintain such kind of files on the system. फाइल है भी हमारे पास, राइट। टेक्निकली हम इस फाइल को बोलते हैं होस्ट फाइल, ये होती भी है। बट द थिंग इज दैट इट इज ऑफ वेरी वेरी लिमिटेड साइज, वी जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू हैव ऑल द एंट्रीज। इंटरनेट इज वेरी वास्ट, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इंटरनेट बहुत वास्ट है, राइट। वी हैव गॉट lakhs of devices, राइट। whichever source you want to have, you want to access, आपको यहाँ पर एंट्री चाहिए, राइट। और मान लीजिए हाइपोथेटिकली हमारे पास नेटवर्क में सभी सिस्टम बहुत पावरफुल हैं, हमने ये फाइल जो है क्रिएट कर भी दिया है, राइट। सो नेक्स्ट चैलेंज क्या है? चैलेंज इज एडमिनिस्ट्रेशन, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये डाटाबेस फाइल है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है? You have to maintain this file, you have to ensure that this file is updated all the times, right? So in future, whatever additions, right, or deletions or modifications you're going to make in this, first of all, this is going to be very frequent. क्यों? Because internet कोई stable तो है नहीं, ऐसा है नहीं कि उसमें devices add नहीं हो रहे। The moment any device is added up, any new resource, device भी नहीं बोलूंगा, resource, एक वेबसाइट पे अगर आ गया उस पर, तो उसका एड्रेस चाहिए, रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, डिवाइस की नहीं। So it's a constant process. Every second, right? Hundreds of resources are being added about, they are being removed. So as and when any changes are happening over the internet, कोई device आया, नया IP address आया, you have to update it, कोई नया IP address निकल गया, right? Change हो गया, delete हो गया, right? So you have to keep on updating, and this activity is happening all 24 hours. So perhaps you need to maintain a team of people which is constantly managing this host file that do on all the systems. आपके नेटवर्क सिस्टम में 100, 500, 1000 डिवाइस हैं, तो पूरी टीम लगी पड़ी है, राइट। वो भी 24 घंटा, just to ensure that this file is always updated with the recent changes happening in the internet. This is the problem. अगर हमने दिमाग में तो हम ये बातें रख ही नहीं सकते हैं, और अगर आपने रखने की कोशिश की सिस्टम के ऊपर, so these are going to be the issues. In one word, issue is that this database file is decentralized. ये decentralized file है. You have the copy of this file on each and every system what you have there on the network. The moment you have any system there on the network,
And now if you want to access any resource on the internet, you are using the name, तो ये file चाहिए, वो भी updated, right? And we have to ensure that this is always updated with the recent changes, whatever happening on the internet. So decentralized file, decentralized database. और database administration हमेशा centralized होता है, decentralized नहीं होता है, right? आपके इंटरनेट पर लाखों सिस्टम ऐसा है. Am I going to maintain लाखों files like this? Yes, this is the issue. So what else we can do? Alternate solution is that if this file is decentralized, so just ensure that it is centralized now, right? Centralize कर देते हैं, ठीक है. Centralize में हम क्या करेंगे? And we are going to outsource this entire activity on a dedicated system. एक dedicated system हमने बना दिया, right? और यहाँ पर इस फाइल को centrally हमने create कर दिया. We are going to maintain this file centrally here now with all the entries, right? And this file is not local, it's going to be global. It's globally available, right? And moreover, because it is centralized, so it's going to be updated dynamically. So we can say it's a dynamic host file, एक तरीके से, right? Yes. So the system on which we are going to outsource this entire activity is going to maintain this dynamic host file, right? This system is known as DNS server, which is dedicated only for this purpose, right? This dedicated system server is equipped with all sort of hardware requirement, CPU, RAM, storage, everything, right? Network card, bandwidth, सब कुछ, right? This is a database file which is globally significant now, available to all the users now, accessible to all the users, and moreover, if at all some updates are required, so it's getting updated dynamically because it's only one single file here, right? Centrally available. Yes. So this is what we're doing practically, in fact. So one of the system is outsourced like this, configured as a DNS server, and now all of the systems, right? यहाँ पर हम host file अभी तक create कर रहे थे, we are not going to create it, right? They are configured as DNS clients, right? ये हो जाएंगे DNS client. मैंने शायद आपको बताया होगा, network communication is a client server model, right? Whenever any application developer develops application, especially network application, so it is going to develop two flavors of the same application. One is the client flavor, other one is the server flavor. हमेशा ऐसा होता है. Client makes the request and server is going to process and serve the request. Yes. तो यहाँ पर हमने इनको बना दिया DNS client, right? And now, if any of this user is going to access any public host, right? ये इंटरनेट पर कोई वेब सर्वर है, right? जिसका पब्लिक आईपी एड्रेस तो है ही है और उसका एक DNS नेम भी है, जैसे www.abc.com, right? And now you as the user here, you are the DNS client. Here suppose you want to browse this server here. तो अभी तक हम क्या करते हैं अपने लैब में? We pick up this public IP address, right? And do the browsing. ये यहाँ पर हम कर रहे थे क्योंकि पोर्टल पर सब कुछ दिखाई दे रहा था आपको, right? Public IP address copy किया, कर दिया. But if suppose this server needs to be accessed by thousands of users, right? Who are not there on the portal, of course, right? So उन्हें तो IP address का पता नहीं है कुछ भी, but yes, they know the name, abc.com. So here, as a user, you are going to make a request in your browser www.abc.com, right? So process कैसे शुरू होगा? Your browser application is going to see first of all in the buffer. Is there any entry? Have we used this kind of request earlier? अगर हमने पहले use किया तो buffer में कहीं ना कहीं मिल जाएगा.
अगर बफर में नहीं मिलता है, then it is going to check the local host file, right? Is it there? वो यहाँ पे सर्च करेंगे, right? कहीं भी अगर उसको मिल गया, काम हो जाएगा. But let's presume यहाँ पर भी नहीं मिला, right? Then this browser is going to check what is the DNS server address. DNS client का मतलब you are told that what is the DNS server address, right? मान लीजिए DNS server address है मेरा 1.1.1.1. So if suppose these systems are configured that DNS server address is 1.1.1.1, it means they are DNS clients. They are DNS clients now. So your browser is going to make a request on this configure DNS server address. Raises a query, जैसे हम बोलेंगे DNS query. Query goes to the server on the configure address. This is my DNS query. Right? In this query, it is asking what is the IP address of this www.abc.com. Right? So upon receiving this DNS query, right, this DNS server is going to make a search in this file. Right? इस फाइल को जो सेंट्रली मैनेज है यहाँ पर, अब इसे हम बोलते हैं जोन फाइल. Right? If suppose this file is there on the local system, then it is a host file. But if it is being maintained, managed centrally here on the DNS server, then it is known as zone file. Right? So it is going to make a search in the zone file. And there, if it finds the entry that abc.com is this IP, so it is going to reply back. This is DNS reply. Right? It will reply that for your abc.com, this is the IP. So your system is going to learn, right? Updates the entry here in the host file that okay, abc.com, this is the IP, right? And of course, this information is going to be in the buffer also. And next time it is going to make the browsing request based on the resolved IP address to the server. So request always goes based on IP. You as a user, you are using the name, but ultimately when the request goes, by that time it is getting translated somehow. Whether translated information is obtained from buffer, or it is from the local file, or it is from the DNS server, configured DNS server, right? But your request is all going to be based on IP address only. Yes. So either you provide the IP address, अगर आपने IP address दिया request में, तब तक ये झंझट ही नहीं होता कुछ भी, right? And if you are using the name, you are using the name because you don't know the IP, right? So this much process takes place. If suppose the system doesn't know, अगर आपके system को पता नहीं है IP address का, तो इतना होगा. This is one time activity kind of thing. Once this regulation process takes place, so this information is going to be there in the buffer, it's going to be there in the host file. Of course, ये temporary entry है, right? उस समय तक रहेगी. So as long as you are making the request frequently, so this is going to be resolved. Right? DNS query is going to be raised to this DNS server only when your system doesn't have the answer. Yes. This is what happens practically. Right? There's a solution to this. Rather than maintaining this host file locally, we are going to maintain it centrally, dynamically, globally on a dedicated system, what we call it the DNS server. Right? But again, this process is not that simple and straightforward as it looks like. ये मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन ये तरीका इतना सिंपल नहीं, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं. राइट? क्या है इशू? अब इशू यहाँ पर भी, उसका कारण एक ही है. क्या है? इंटरनेट इज वेरी वास्ट. प्रॉब्लम यहीं पर है. भाई प्रोसेस तो सभी काम करने वाले. इंटरनेट इज वेरी वास्ट, राइट? We have lakhs of devices. Out of those lakhs of devices, even suppose 1% of the devices raise a query like this to a single DNS server. So the amount of traffic which is going to be generated, right? Query traffic I'm talking about, is going to be so enormous that literally this server is going to melt. इतना traffic generate हो.
Your internet is so vast कि एक या दो सर्वर अगर आपने उसमें रखे हैं, so they are going to crash, melt straight away, right? Within seconds, right? Traffic इतना enormous है internet पर. So कहने का मतलब one or two servers over the internet is not at all sufficient. Rather, you need thousands of servers. You really want to cater the request traffic which is generated by lakhs of user devices, right? वो अभी तो कोई गिनती नहीं है. इस वक्त कोई गिनती नहीं that how many devices are there, users are there, right? Even so क्यों नहीं? Because right now we are using the mobiles, right? एक मोबाइल में अगर दो सिम है, दो नेट कनेक्शन चले, right? And we are using a mobile very often to browse the things. आप सोचिए आप जैसे लोग कितने हैं जो राह चलते थोड़ा चलते भी ब्राउजिंग कर रहे हैं, राइट? मेल भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, डाउनलोड अपलोड कुछ भी कर रहे हैं, सर्चिंग ही कर रहे हैं, राइट? सो दे आर गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट और सारा कम्युनिकेशन वन क्लिक व्हाट यू डू, राइट? If suppose IP address is not known, request goes to the server for resolution process. So the amount of traffic for this DNS resolution is getting generated is so enormous that having one or two servers there over the internet is simply not sufficient. We need thousands of servers, right? And when you need something in thousand like this, that becomes the technology, because how you're going to manage it, right? So when we talk about the DNS servers over the internet, in fact, we have the hierarchy. We have the hierarchy in these DNS server management. In fact, all these DNS servers what we have, they are working at 3 layers. It's a 3-layered hierarchy structure of DNS management. All the DNS servers what you have, they are working somewhere in one of these layers. 3-layered hierarchy, right? At the top in this hierarchy, we have the root servers. These are types of DNS servers now. So at the top in this hierarchy model of DNS servers, we have the root servers. और आज की डेट में इंटरनेट पर 13 types of root servers are there. 13 types हैं. 13 का ये नहीं कि 13 root servers हैं. 13 types of root servers are there. And these root servers at the top, they're not going to maintain the data of your resources, right? आपके जो इंटरनेट के resources हैं, websites हैं, right? FTP sites हैं, any resource आपके ऐसे objects इनका भी URL है, right? So whenever you are trying to access any URL, it is all getting converted into IP address only. Without IP address होने वाला नहीं कुछ भी. So root servers are not going to maintain your resource information. Rather, at the top they are maintaining the information only about TLD servers. Root servers, they maintain address information of only TLD servers. TLD का मतलब होता है top level domains. So top level domain servers का ही information these root servers are maintaining in their files at the top. Nothing else. Top level domain example जैसे .com. This is a TLD. .co.in. This is TLD. .in, .mil, .edu, and like this we have got once again thousands of TLDs. For every TLD, we have TLD servers that do multiple numbers, which makes the second layer in this hierarchy. That the second layer in this hierarchy model, we have got the TLD servers. For example, you have .com TLD servers, meaning these are the servers
which are going to be multiple hundreds once again. And these servers, when I say .com TLD servers, they are going to maintain the domain information only for those domains which belong to .com TLD. So .com के TLD servers में they're going to maintain the domain subdomain information belonging to .com only, nothing else. For example, google.com. So Google क्या हो गया? Subdomain. .com top level domain, right? So google.com. So Google का information, google.com का information इनके पास है. So these servers are going to maintain the domain information, or to be more specific, subdomain information belonging to .com only. Google.com, Yahoo.com, Amazon.com. So all .com subdomains are going to be maintained here. Similarly, if I talk about co.in DLD servers, meaning these are the group of servers which are maintaining the subdomain information belonging to co.in TLD only. Right? We have got google.co.in also. google.com भी है, google.co, दोनों अलग अलग हैं. Right? Yes. और इनका एड्रेस इंफॉर्मेशन जो है एक एक सर्वर का, this is maintained centrally with these root servers. Address information only for TLD servers are there centrally, right? And finally, the last layer, we have got authoritative name servers. Authoritative name servers, right? So ultimately, these name servers maintain the actual information what we've been talking. These name servers are maintaining the zone file, right? जो अभी मैं आपको बता रहा था, DNS server, दरअसल हम बात कर रहे थे this last layer in the hierarchy, name servers, right? They are maintaining the zone file. And zone file consists of this mapping database information, जिन्हें हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में DNS records. DNS records. Zone file is always there for a domain. Zone file हमेशा हर डोमेन का जोन फाइल होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग तरह के सर्वर्स हैं, ठीक है? क्या वो क्लाउड पर है या ऑन प्रेमाइसेस? ओके. और आपके ऑर्गेनाइजेशन को डोमेन नेम मिला है abc.com, right? So all these servers are going to have their name in this domain only. जैसे ये आपका है वेब सर्वर और इसको आपने नाम दिया है www, राइट? तो कंप्लीट एड्रेस क्या बन जाएगा? अब किसी को अगर ये वेब सर्वर एक्सेस करना है जिसका नाम है www, राइट, और आपकी डोमेन आपको जो दिया गया है वो है abc.com, सो एनी थर्ड पार्टी यूजर जो बैठा है इंटरनेट पर वो रिक्वेस्ट करेगा www.abc.com, ऐसे करेगा www.abc.com. इसको हम बोलते हैं FQDN, टेक्निकली fully qualified domain name. Fully qualified domain name. So request is always made like this, fully qualified domain name, क्योंकि DNS server को यही भाषा समझ में आती है, right? All the DNS servers, they expect the request in FQDN format whenever the DNS query goes to the DNS server. तो जिन्हें हम DNS server बोलते हैं दरअसल वो होते हैं authoritative name servers, and these name servers maintain the zone file for every domain. So your domain is abc.com, so for this abc.com, a zone file is going to be there created in the name servers. These name servers are there with ISPs.
राइट, abc.com। और इस abc.com का अपना जोन फाइल है, जोन फाइल में डीएनएस रिकॉर्ड होते हैं, राइट। और डीएनएस रिकॉर्ड भी कई तरह के होते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे आप ये जोन फाइल तैयार करते हैं, 2 DNS records are getting created by default. One is known as SOA record. SOA का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। ये रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है और ये मैंडेटरी भी है, जरूरी भी है, राइट। और एक दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट होता है, वो है NS रिकॉर्ड। NS का मतलब होता है नेम सर्वर रिकॉर्ड, राइट। नेम सर्वर रिकॉर्ड में it is going to have the addresses of name server from the service provider. ये दो रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं the moment you create a zone file for your domain, right? ये आपकी डोमेन है abc.com और अपने सर्वर का इंफॉर्मेशन अगर आपको यहाँ रखना है तो आपको एक जोन फाइल लेना है फॉर योर डोमेन, उसमें एंट्री आप करोगे जिन्हें हम बोलते हैं डीएनएस रिकॉर्ड। जैसे जोन फाइल तैयार करते हो 2 डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट और ये मैंडेटरी भी है, इन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते। On the top of that, the records what we are going to create now, उन्हें हम बोलते हैं A type of record, A type, right? यहाँ आप लिखोगे आप, right? क्या है होस्ट नेम www IP एड्रेस। आपका जो दूसरा सर्वर है वो है FTP सर्वर, उसका आपने नाम दे दिया FTP, जो भी नाम आपको देना आप दे सकते हो, राइट। तो मैंने नाम दिया FTP एंड IP एड्रेस। तो अगर किसी को FTP करना है यूजर को तो कैसे टाइप करेगा, तो टाइप करेगा ftp.abc.com, ऐसा टाइप करेगा, ओके। इट ऑल डिपेंड्स यू दैट व्हाट नेम यू आर गोइंग टू असाइन, जो भी नाम आप असाइन करोगे उसका एंट्री आपको यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर जोन फाइल पे। इस एंट्री को हम बोलते हैं ए टाइप ऑफ रिकॉर्ड, इज द सो वी हैव गॉट वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स, ये सब डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं, राइट। एसओए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट है, and on the top of that what we are going to create here, they are a type of record, right? So जो एंट्री आप यहाँ करते हो अल्टीमेटली रिक्वेस्ट कोई अगर यूजर भेजता है द फॉर्म ऑफ एफक्यूडेन, वो घूमते घामते यहीं पर आता है, राइट। डायरेक्टली नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है, लेकिन आता ही यहीं पर, बिकॉज दिस इज द अथॉरिटी, right? And from here this information is going to be propagated out to rest of the servers in the world, in the internet, यहीं से propagate होता है सब जगह, right? So using this service route 53, we are going to manage the entries in the name servers of this ISP, और इस वक्त ISP है Amazon AWS, right? AWS के अपने खुद के नेम सर्वर्स हैं, वहां पर हम ये जोन फाइल मैनेज करेंगे थ्रू रूट 53, राइट। इससे ऊपर की जो हायरार्की है इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। दिस इज समथिंग मैनेज्ड बाय द अथॉरिटेटिव एजेंसीज ओनली, राइट। जो गवर्निंग बॉडी है ये इसको मैनेज कर रही है, बट यू एज एन एडमिन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू मैनेज दिस स्टफ इन द नेम सर्वर्स ऑफ ISP। This time we are doing it in AWS through route 53, right? So जो भी आप यहाँ पर मैनेज करोगे, this is going to be propagated to rest of the servers in the internet, right? यहाँ से propagate होता है, yes, बोलिए। तो ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, कल हम करेंगे इसको। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाउ रेजोल्यूशन वर्क्स एक्चुअली कल ही बताता हूँ और उसका लैब भी देखेंगे, Yes, sir. ठीक है। Right, we'll meeting at the same time, right? 6:30. Okay, sir. Thank you. All right.